Hello, so guys, today we are going to discuss state of matter lecture number 6, that is hydrogen bonding. How to explain hydrogen bonding? Okay, now hydrogen bonding just like as interaction in between the two molecules, but both molecules having atom hydrogen. So how to explain? Now write down definition. Electrostatic force of attraction, in between hydrogen atom which is directly bonded, which is covalently bonded with electronegative atom like nitrogen, oxygen and fluorine. And electronegative atom of nitrogen, oxygen, fluorine of the another molecules of the same substance or different substance, different substance. Okay. Try to understand carefully. ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन है, एक तो उस मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल्स के नाइट्रोजन एटम के बीच में अट्रैक्शन है। अब ये हो सकता है कि वो सेम सब्सटेंस हो या ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंट सब्सटेंस हो। मीन्स H2O H2O के बीच हो सकता है, H2O NH3 के बीच भी हो सकता है, NH3 NH3 के बीच हो सकता है, NH3 HF के बीच भी हो सकता है। आइए हम देखते हैं, इसका सेंस समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन हाइड्रोजन एटम which is covalently bonded with electronegative atom like nitrogen, oxygen and fluorine, and electronegative atom of nitrogen, oxygen, fluorine of the another molecules of the same substance or different substance. This is the very easy definition of the hydrogen bonding. Now
on the basis of instance may be understood. ओके, इस स्टेटमेंट को हम लोग एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो डाउट कि हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, एक अट्रैक्शन होगा। वो अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे जरा ध्यान देना, सपोज दिस इज द HF मॉलिक्यूल्स, HF molecules, H bears a partial positive charge and here F bears a partial negative charge, which attract by electrostatic force of attraction. Now point out here H and then F. H bears partial positive and here F bears partial negative. And now next here H and then F bears partial positive, bears partial negative, and now so on. But in case of water molecules, now here hydrogen, oxygen, here hydrogen, oxygen bears partial negative charge and hydrogen bears partial positive charge. Now one of the oxygen of the one molecules which interact with another molecules. Now here oxygen, here hydrogen. Now hydrogen bears partial positive charge and oxygen bears partial negative charge. Now this will also interact, this will also attract due to electrostatic force of attraction. Now you represent in this way, and in case of ammonia, here hydrogen, here nitrogen, here hydrogen, and then here hydrogen, nitrogen bears one of the lone pair electron. Now nitrogen having negatively partial negative charge and hydrogen bears partial positive charge, now interact one to another by electrostatic force of attraction. You will get here nitrogen, here hydrogen, and now point out the structure of the ammonia. Nitrogen also bears a negative charge, hydrogen bears also a positive charge. Why hydrogen bears a partial positive charge and nitrogen bears a partial negative charge? Due to electronegativity difference in between the hydrogen and nitrogen, the sharing electron in between the nitrogen and hydrogen attract towards the nitrogen side. Nitrogen makes a partial negative charge. Now another one of the molecules of the ammonia also attracted by electrostatic force of attraction. Now you will get here, okay, partial negative, here partial positive. This is the hydrogen bonding, okay, dotted line. Dotted line represent hydrogen bonding. Hydrogen bonding, okay. Now write down dotted line represent hydrogen bonding. Now this is the different molecules. Hydrogen bonding makes in between the two different molecules. May be possible hydrogen bonding also forms in same molecules. Now here point out this is the here F and here O,
and then H. Okay? Now in this case, this is the orthofluorophenol. Fluorine bears partial negative charge. You know, fluorine is highly electronegative, which bears a partial negative charge. Now point out a sign, partial negative charge. Now write below up here F and here OH. Okay? This is the hydrogen bonding. Okay? Now in this another examples, this is also a hydrogen bonding. Now next one is C. Here Cl, here Cl. Now point out many examples and then remove on the board. Okay. Thank you. Note number 1. This is the important point, which makes the objective question, okay, in several competitive exams. Question number 1, hydrogen bonding, hydrogen bonding forms in solid, liquid, and gases. Okay? All state of matters, that is solid, liquid and gases, hydrogen bond appear. Okay? Now strength of hydrogen bonding, strength of hydrogen bonding, strength of hydrogen bonding is very big in compared to covalent or ionic, but stronger, okay, but stronger than van der Waals force of attraction. Van der Waals फोर्स, बात ध्यान से समझिएगा। ये कहना चाहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज, ये ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स, ये तीनों फेज में अपीयर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरी बात ये बताना चाह रहे हैं
कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ होता है, नो डाउट कि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, ये वीक अट्रैक्शन होता है। अगर हम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें? कोवैलेंट बॉन्ड से कंपेयर करें या हम आयनिक बॉन्ड से कंपेयर करें, तो नो डाउट कि ये वीकर होता है। मीन्स हल्का सा अगर हमने एक्सटर्नल कोई कंडीशन अप्लाई किया तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक कर जाता है। ओके, इन कंपेयर टू कोवैलेंट एंड आयनिक, बट ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होता है। इसका मतलब वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in compare to hydrogen bond, covalent bond and ionic bond. Okay, thank you. एक क्वेश्चन आपके यहां पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे बेटा, कोशिश करिएगा समझने की, बिल्कुल शॉर्ट वे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछता है इन वाटर मॉलिक्यूल्स, इन अमोनिया मॉलिक्यूल्स और इन HF मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म? ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट की, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, number of hydrogen bond, number of hydrogen bond, number of hydrogen bond, bond equal to number of hydrogen atom, number of hydrogen atom, number of hydrogen atom plus number of lone pair electron. Exception in case of HF, only one number of hydrogen bond, okay, bond fall. समझने की कोशिश करिएगा, जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल्स आपको दे दिया जाए और क्वेश्चन पुटअप करे हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और इन केस ऑफ HF मॉलिक्यूल्स। NH3 की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मच? 3, and number of lone pair 1, total number of hydrogen bond will be 4. In case of H2O, how many number of hydrogen bond? 1 lone pair, 2 lone pair plus 2, how many? 4. 2 lone pair and 2 hydrogen bond, 2 hydrogen atom, 2 lone pair and 2 hydrogen atom, total number of how much? 4. But in case of HF, don't apply the formula. Try to remember, in case of HF, only one number of hydrogen bonds. Okay? Okay, thank you. Next, we will be discuss
hydrogen bonding. Okay, types of hydrogen bonding. Hydrogen bonding. Types of hydrogen bonding. Hydrogen bonding can be classified into two categories. Okay, hydrogen bonding can be classified into two categories. First is intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग. शार्ट में हम लोग इस बात को देखेंगे. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और अनदर टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बातें ध्यान से समझिएगा. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आई नो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, one is the intermolecular hydrogen bonding and another one is the intramolecular hydrogen bonding. According to heading, अगर हेडिंग के अकॉर्डिंग हम देखें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा. इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स. मे बी पॉसिबल बोथ आर सेम, मे बी पॉसिबल बोथ आर डिफरेंट. बट इन केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग which appears in same molecules, itself molecules. Okay, so now write the short way definition. Which appear in between two molecules, in between two molecules, may be possible, same or different. Okay, same or different. Now in case of intramolecular, which appear okay, which appear in same molecules, okay. Now write the examples just like as above. HF, now here HF, now here HF, so on. Okay, now H partial positive, here partial negative, here partial positive, here partial negative, here partial positive, here partial negative, here partial positive, here partial negative. Okay, now in case of ammonia, in case of water, so on. And in case of intramolecular hydrogen bonding, which appears in same molecules. Now
this is the F, here OH. H bears partial positive, oxygen bears partial negative, and here F bears partial negative. This is the intramolecular hydrogen bonding. Okay? Okay? Try to solve some question. Question number 1. Which of the following molecules to forms intramolecular hydrogen bonding. Okay? First option, this is the water molecules, and second option, this is the ammonia molecules, and now here third option, this is the HF molecules, and fourth option, CH3CO single bond CH, here CO and then O, here C2H5. Okay? Now here point out in this form OH. This is the enolic form. अब इसमें आपको आंसर ये तलाशना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यू नो वाटर ये नहीं फॉर्म कर सकता, अमोनिया डू नॉट फॉर्म्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हियर HF डू नॉट फॉर्म्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ दिस आंसर विल बी करेक्ट. ओके? Okay. Condition for hydrogen bonding. Okay? Condition for hydrogen bonding. What are the conditions to form say hydrogen bonding? क्या कंडीशन होंगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा? तो फर्स्ट है हाइड्रोजन एटम must be present, hydrogen atom must be present in a molecules. Okay? And second, highly electronegative atom like nitrogen, oxygen and fluorine. Okay? Hydrogen atom must be present in molecules. Highly electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine, which forms hydrogen bonding.
hydrogen bonding. Okay, nitrogen, oxygen and fluorine. Third point, size of electronegative atom is very small, very small. Now, according to size of the nitrogen atom and size of the chlorine atom, both are same, but nitrogen forms a hydrogen bonding, chlorine does not. Why? What will be the reason? Nitrogen forms a hydrogen bonding, chlorine does not form a hydrogen bonding, but electronegativity of the nitrogen and chlorine both are same. Now, in fourth point, nitrogen and chlorine both having same electronegativity, but nitrogen forms hydrogen bond. Nitrogen forms hydrogen bond, chlorine does not. Because due to polarization power or size of Cl atom, because due to, this is the solution of this question, size of the chlorine atom is larger than nitrogen atom. Okay, thank you very much. Next lecture, next days. Thank you.